Good morning, students. In our last class, we have discussed differentiation. Now, today we are going to discuss the formulas for the product and division of two functions. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सिंपल से क्वेश्चंस थे डिफरेंशिएशन के, जिसमें हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना था, राइट? बट टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस. ओके, जब दो फंक्शंस को हमको डिवाइड करना हो, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, जब दो फंक्शंस को हमको मल्टीप्लाई या डिवीजन दे रखा हो और हमको उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, दो फंक्शंस हमने मान लिए f1 और f2 be any two functions, then the formula for product of the two functions can be given by. जब दोनों फॉर्मूले का प्रोडक्ट आपको गिवन हो, मतलब दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उनका डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला होता है dy dx ऑफ f1 f2 is equal to f1 as it is dy dx of f2 plus f2 as it is dy dx of f1, right? So in this way we can find the differentiation of product of two functions where f1 and f2 are two functions. Suppose हमने मान लिया f1 हो गया x, f2 हो गया y, right? So f1 f2 कोई भी दो फंक्शन हो गए, मान लिया sin x cos x या और कुछ भी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का. नाउ अगर दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ डिवीजन में है, ठीक है, मतलब अगर दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ डिवीजन में है सच दैट dy dx ऑफ f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ डिवीजन में है देन dy dx ऑफ f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू द होल न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ second function. This is the formula for the division of two functions. Okay, so students, you have to write both these formula in your copy. Now we are going to solve some of the numericals that are based on the product and division of two functions. Okay, now we are going to solve this numerical, that is sin x cos x, right? Here we have two functions sin x and cos x, and which are following the product with each other, right? मतलब they are in multiplication with each other. So students, we know that here first function हो जाएगा sin x और second function हो जाएगा cos x, right? Now we know that the formula for product of two functions can be given by dy dx of f1 f2 is equal to first function as it is dy dx of second function plus second function as it is dy dx of first function, right? हम ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी नोन है दैट फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन. नाउ वी विल सॉल्व दिस. नाउ we will write the value of first function here. First function हो जाएगा sin x dy dx of second function is cos x plus cos x as it is dy dx of first function is sin x, right? is equal to sin x as it is. आपको पता है कि dy dx of cos x क्या होता है? dy dx of cos x is minus sin x, right? Plus this cos x as it is dy dx of sin x is cos x. यहां आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा that dy dx of sin x is cos x and dy dx of cos x is
minus sin x, right? You have to put both these formulas in this bracket, okay? Now ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट? सो दिस विल बी द आंसर. In this way we can find the product of two functions by using this formula. Now we will solve one more numerical that is based on this kind of that is based on this formula, and the next question is the second question is x square 10x, राइट? अब हमारे पास पहले हमने दोनों फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वाले लिए थे, अब हमने एक एल्जेब्रिक टर्म वाला लिया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वाला लिया है. तो द फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर and the second function is 10x, right? Now again we will do the same thing, that is dy dx of f1 f2 is equal to first function as it is dy dx of second function plus second function as it is dy dx of first function, right? फर्स्ट फंक्शन हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, सो वी हैव रिटन एक्स स्क्वायर हियर, देन dy dx ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 10x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब 10x एज इट इज, dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, राइट? तो यहां से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, dy dx ऑफ 10x इज sec square x प्लस 10x as it is dy dx of x square. Now students, you know that here you have to write dy dx of 10x is equal to sec square x and dy dx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास आ गई 2x की पावर 2 minus 1 और 2 minus 1 मतलब 1, right? So from here what do we get? X square sec square x plus 2x 10x. So in this way we can find the product of two functions with the help of that formula, right? Now let us see one more example of this type of question, and then we will proceed to the second type, that is the division of two functions, right? एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं. Now the third question is log x e to the power x, right? यहां पे हमने एक टर्म ले ली log और दूसरी टर्म ले ली एक्सपोनेंशियल. सो द फर्स्ट फंक्शन इज log x and the second function is e to the power x, right? Now d by dx of f1 f2 is equal to first function as it is d by dx of second function plus second function as it is d by dx of first function, right? फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास log x as it is dy dx of e to the power x plus e to the power x as it is dy dx of log x, right? log x as it is dy dx of e to the power x क्या होता है? e to the power x plus e to the power x as it is dy dx of log x is 1 by x. So our answer will be log x e to the power x plus e to the power x by x. This is the answer. So in this way we can solve the numericals that are based on the product of differentiation of two functions, right? Now we will solve one numerical that is based on the division of two functions. ठीक है? Our question is sin x
अपॉन cos x, राइट। हमने मान लिया कि जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज sin x अपॉन cos x, इसका मतलब जो फर्स्ट फंक्शन होगा दैट इज sin x and the second function is cos x. Okay, now students, you know that by the formula dy dx of f1 by f2 is equal to whole denominator में f2 का स्क्वायर f2 as it is dy dx of f1 minus f1 as it is dy dx of f2, right? This is the formula for division of two functions, that is sin x upon cos x. तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में f2 that is cos x का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाएगा cos x as it is dy dx of f1 that is sin x minus f1 as it is मतलब sin x as it is dy dx of f2 मतलब कि cos x, राइट। नाउ न्यूमरेटर में ये cos x as it is dy dx of sin x, ये पूरा किसके बराबर होता है, dy dx of sin x is cos x, तो यहां पे हमने लिख दिया cos x minus this sin x as it is and dy dx of cos x is minus sin x, so we have written minus sin x here divided by cos square x, right? Now what do we do from here? Cos x into cos x is cos square x minus minus plus हो जाएगा here minus plus sin x into sin x is sin square x divided by cos square x, or you can write cos square x plus sin. Here you have to write the formulas, right, in the bracket. Now we know that by the identity that sin square x upon sin square x plus cos x square x is equal to 1. आपने आइडेंटिटी क्लास 10 में पढ़ी है that sin square x plus cos square x is always equal to 1 and 1 upon cos square x हो जाएगा sec square x and this will be our answer, right? आपको पता है 1 upon sin is cosec, 1 upon cos is sec and 1 upon tan is cot, right? So 1 upon cos square x will be sec square x. Okay, now we will do some more numericals that are based on this pattern, x square upon e to the power x. Okay, our next question will be x square upon e to the power x, where one is the algebraic term while the another one is the exponential term. Okay, so students, we know that dy dx of f1 upon f2 is equal to the whole denominator में f2 as f2 का square, f2 as it is dy dx of f1 minus f1 as it is dy dx of f2, right? now यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे द होल डिनोमिनेटर में f2, अगर अच्छा यहाँ पे f1 हो गया हमारा x स्क्वायर और f2 हो गया e टू द पावर x, राइट? तो ये हो जाएगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर, f2 एज इट इज मतलब e टू द पावर x एज इट इज dy dx ऑफ f1 that is x square minus f1 as it is that is x square as it is dy dx of f2 that is e to the power x, right? So the e to the power x is as it is dy dx of x square, आपको पता है by the first formula that x to the power n is equal to nx to the power n minus 1, तो ये कितना हो जाएगा 2x minus x square as it is dy dx of e to the power x is e to the power x. Okay, now denominator में ये हो जाएगा e to the power 2x और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x e to the power x minus e to the power x into x square के होल डिनोमिनेटर में e to the power
2x, and this will be our answer. So in this way we can find the differentiation of division of two functions, that is f1 and f2, right? So I hope that questions based on the product and division of two functions are clear to all of you. Now now we will solve one more question that is based on this type of pattern only, that is the division of two functions. So our first function will be x cube and the second function will be cot x, right? So from here we will get the values of f1 and f2. Now we will simply put both the values in our formula, that is dy dx of f1 upon f2 is equal to the whole denominator में f2 square, f2 as it is dy dx of f1 minus f1 as it is dy dx of f2, right? So what do? We will just put the values of all these f1 and f2 here. f2 की वैल्यू हो गई cot x का होल स्क्वायर, f2 is cot x dy dx of f1 की वैल्यू हो गई x क्यूब माइनस x क्यूब एज इट इज dy dx of f2 हो गया हमारे पास cot x, right? So from here what do we get? This cot x as it is dy dx of x क्यूब. आपको पता है कि dy dx of x क्यूब मतलब x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. तो n हो गया 3, x as it is n minus 1 मतलब 3 minus 1 और 3 minus 1 कितना हो गया 2, right? Minus this x cube as it is dy dx of cot x. आपको पता है dy dx of cot x का फॉर्मूला होता है minus cosec square x, right? Students, you have to learn all the formulas. Until and unless you don't learn the formulas, you will not be able to do the questions that are based on differentiation and integration, right? So you have to learn all the formulas that have been discussed earlier and that we are going to discuss further also. Okay? So all these formulas must be clear to all of you. This will be cot square x denominator में. Now what do we get from here? 3x square cot x minus ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x क्यूब cosec square x divided by cot square x, right? आप चाहे तो आगे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. It will become 3x square cot x upon cot x, cot square x, ये cot से एक cot कैंसल प्लस x क्यूब cosec का मतलब हो जाएगा 1 by sin square x. अच्छा, उसको करने से कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. cosec square x upon cot square x. This will become 3x square. इस cot को अगर मैं ऊपर भेजना चाहूँ तो ये हो जाएगा 10x plus x क्यूब cosec square x upon cot square x, right? So this will be our answer. So today we have seen the differentiation of the product of two functions as well as the division of two functions. I hope the formula and the numerical must be clear to all of you. Now students, you have to learn all the formulas, only then you will be able to solve the numericals. Okay, so that's all for today's class, students. In our next class we will study about integration and the product of integration. Okay, thank you.